Good morning, guys. Can you hear me? Good morning, sir. How are you guys? Okay, so let's any question from support vector machines? If not, now today we will study one more kind of hi-fi or state-of-the-art model. It is called hidden Markov models. So I believe you remember Markov models. थोड़ा सा मार्कोव चेन हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द टाइम सीरीज एनालिसिस where we have transition probability matrix that it jumps from one state to another state. Okay. Assume that you have studied it and you remember it. So today we will discuss hidden Markov model. So what happens in Markov models? We know the states. Like example, that whether if it is raining today, what is the probability with it rain tomorrow, or with what probability it will be dry tomorrow. So we call it transition probability matrix. So it could be like 0.6. If it is raining today, there is 60% chance that it will rain tomorrow and 40% chance that it will be dry. If it is dry today, there is 80% chance that it will not rain tomorrow, and there is 20% chance that it will not rain tomorrow and it will remain dry 80% chance. So sum of these are always equal to 1. So process move from one state to another state, generating sequence of state. So suppose we are looking at a week. So a sequence could be rain, dry, dry, rain. Sir, sorry, can you repeat last 2-3 minutes? I am unable to join. Okay, so what we have started, we will be looking at hidden Markov models today. It is one of the state of the art. It started in speech recognition, but now it's used in most of the data analytics techniques. So I was trying to remind you of Markov chains, which we have discussed when we were discussing time series analysis. So there we looked at that suppose there are two states, and when I say states, the process is whether it will be the weather is the process, and we are trying to understand whether it will be rain or it will be dry. So we have found suppose a transition probability matrix. This is called TPM. That if it is raining today, it will rain tomorrow with probability 0.6 and it will remain dry with probability 0.4. Similarly, if it is dry today, it will be rain tomorrow with probability 0.2 and 0.8. So ideally, one TPM gives you what will happen tomorrow. But we are mostly, when we look at the data is continuous. Like suppose I'm looking at suppose this week weather process. If I'm looking at this week weather process, I will have rain, dry, rain. So Monday को rain हुआ, Tuesday को dry था, Tuesday को dry था, Wednesday को dry था, Thursday को फिर rain हुआ. So this is the sequence it will generate. So that is the second bullet. Process move from one state to another, generating a sequence of states. So Markov chain property. Just a second. So what Markov chain says that probability that it is raining on Thursday is only depending on what was happening on Wednesday and not on what was happening on Monday. So that is your Markov chain property. So define a Markov model. We have to specify transition probability, which we have specified here, and initial probabilities. Initial probabilities, this is conditional, right? The probabilities which we are looking right now are conditional. That if it is raining today, so we put it as probability that what is the probability that it is raining today, given that it is dry yesterday. Okay. So we have to provide the transition probabilities
And apart from that, irrespective of how the conditional probabilities are working, there is always a probability what is the chance of raining today. That is based on, let's say, 10 years of data. We know that on during the this winter season which have started, chances of rain on any day is zero point 0.2 or zero point 0.3 or very less chances, and dry is high. So these two things you need to define. So a rain dry example जैसे यहाँ देख लेते हैं, 0.3, 0.7, 0.8, 0.2. So there are two states the weather can be, either it is raining or it is dry. So transition probabilities we have found 0 0.3, 0 0.7, 0 0.2 and 0 0.8. And let's say initial probability that any day it will rain without any conditioning what is happening yesterday. If these are 0 0.4 and 0 0.6, and if you are asked, so Markov chain probability sequence when we try to find it. So suppose this is the Markov chain probability that Si1, Si2, Sik. So we are just using Bayes formula to find it. So suppose 4 दिन लगातार हमने ऑब्जर्व किया, तो मंडे को ड्राई था, ट्यूसडे को ड्राई था, वेडनेसडे को रेन हुआ और थर्सडे को रेन हुआ. एंड इफ यू वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी गिवन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स and the initial probabilities, we can write probability that it was raining given that it was raining into probability that it is raining, then given that it is dry, probability that it was dry, given that it is dry into probability of dry. So if you remember Bayes formula, it is simply Bayes formula. We will multiply all this probability and we will find the probability of this sequence to happen. Does that make sense? Yes, sir. तो हम लोग अभी तक टीपीएम देखे थे सिर्फ व्हाट विल हैपन टुमारो. नाउ देयर इज अ सीक्वेंस का मतलब है डेटा जनरेट हो रहा है और उस डेटा का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं. सो वी नो दैट सपोज ऑन थर्सडे इट हैज रेन्ड, वेडनेसडे इट हैज रेन्ड, ट्यूसडे इट हैज रेन्ड, मंडे इट हैज रेन्ड. सो वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस टू हैपन. अब मार्कोव से हिडन मार्कोव क्या होता है? सो यहाँ पे rain and dry are not the states but the observation sequence. So what I will say that I'm looking at a weather and I'm saying rain dry, dry rain. These are the sequence I am observing over a week. Okay, they are no more the states. Earlier they were the states, now the states are hidden to us, and that's why you will see this part is in the dotted line. This is hidden to us. So why it is happening? So let's say I'm observing atmospheric pressure. Atmospheric pressure can be low or a high, and based on that it will be rain or dry. So now these are my states which are hidden to me. We do not really know, and these are my observations that I have seen a rain or I have seen a dry. So two observation, rain and dry. So probability of jumping from a low atmospheric pressure to low atmospheric pressure is 0.3, and these numbers are here. This is a transition probability matrix. These are called transition probability matrix. Then there is a observation probability matrix. Observation is given that it was a low atmospheric pressure, what is the probability that it will rain? So that is what probability that it was raining given that it was low atmospheric pressure. So those probabilities are written 0.6, 0.4, 0.6 and 0.3. Is that clear, guys? Also, let's say the probability that any day it will be low or high pressure is 0.4 and 0.6. So what is the difference you are seeing from Markov to hidden Markov, and why the name hidden Markov? अरे कुछ तो बोलो, सो रहे हो क्या संडे बोल के? Manish, Can you repeat the question, sir? are you following what is the changes from Markov to a hidden Markov model? In Markov, what was happening, and what is in hidden Markov, what is happening, and why we are calling it hidden? सर इसमें हिडन इसलिए कि लो और हाई का जो प्रेशर है वो ऐड हुआ है. Okay, so what we are seeing is earlier rain and dry itself was the process, right? And we have said there are two states of weather can be either in the rainy state or dry state. Now we are saying that these are not my states,
but these are my observation sequence. My states are atmospheric pressure, which can be low and high, which is hidden to me, atmospheric pressure. But we know that atmospheric pressure जब change होता है तो weather low or high, rain or dry होता है, and that atmospheric pressure can be low and highs, and it has its own transition probability matrix. So this part जो तुम्हारा hidden hai, this is the hidden states, and that's why it is called hidden Markov model. But this change in the atmospheric pressure is responsible for whether it will rain or dry, which is given by the observation probabilities. Clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको ना सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूं क्यों हिडन होता है. सपोज आई एम फ्लिपिंग अ कॉइन, हेड और टेल आ रहा है, ठीक है, एंड इफ आई गिव यू now suppose I'm in front of you and I'm flipping a coin and you are seeing the sequence of head and tail and so on, right? So you can say that the states of the process are head and tail. Now suppose I'm sitting here at my study room and flipping the coins and telling you this is the sequence. What is hidden here? You do not know how many coins I am flipping. I may be flipping 2 or 3 or 4 coins. I may be flipping a fair coin, a biased coin, or unbiased coin. So those things are hidden to you. You can only see this sequence, that this is what is happening. How it is generated, you do not know. That is hidden to you. That is why it is called hidden Markov model. So suppose you want to calculate probability of a sequence of observation. In our example, 2 दिन का sequence देख रहे हैं, dry और rain. So dry और rain को अगर हम लोग expand करेंगे, so probability of dry and rain given it was low and low both day. Probability of dry and rain, it is low and high, dry and rain, high and low, and so on. So you have these combinations and these probabilities will add up to give you probability of dry and rain. अब उसका पहला टर्म देखो, पहला टर्म निकालने के लिए probability of dry and rain given low, probability that it is dry and rain given that the temperature atmospheric pressure was low into probability that again the base formula we are using. So we multiply this and we find the probabilities. So the only difference is earlier it was we were just multiplying the sequence whether it was dry or rain. Now we are multiplying it with the sequence whether it was low or not. So this brings us to the definition of hidden Markov model. So in the hidden Markov model, these are the 5 things which are important to define a hidden Markov model and work with it. So पहला होता है observation sequence. Like in our weather example case, it is rain, dry, rain. मतलब 100 दिन का sequence है मेरे पास. States होते हैं which are hidden to us. जैसे अभी हम लोग last example में देखें, atmospheric pressure was the hidden state. So we had 2 states there. Then there is a transition probabilities that is jump between 2 states. Rain, high atmospheric pressure और low atmospheric pressure का jump था. Then the start probabilities, तुम्हारा हर पर्टिकुलर स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटीज क्या है, एंड देन द इमिशन प्रोबेबिलिटीज इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटीज. गिवन दैट आई एम इन दिस स्टेट, what is the probability that it will be raining or it will be dry? So that is called emission probabilities. So these are the 5 things which are important to define a hidden Markov model. Can you think of any other observation sequence? अभी तो मैं rain, dry, head, tail सिर्फ दे रहा हूँ, और क्या हो सकता है if we are trying to predict something? शेयर मार्केट का सर लो एंड Yes, please go ahead. शेयर मार्केट लो एंड हाई. Share market low and high. Very good. What could be hidden state, possible hidden state for that? So let's say stock price की बात करते हैं. Let's not put anything. just stock price तुम्हारा शेयर मार्केट में हर दिन कितना रहा. Suppose 100 rupees क्लोजिंग प्राइस था, या 50 था, या 80 था. So this is the sequence you are seeing. Yes. Okay. Now what could be a factor which is emitting it? This is the observation. That is the thing. You can only see the observation sequence. You do not know what is hidden to it.
what could be a possible reason it is going up and down? Some government policy announcement. That is also true. We can simply look at the Sensex. Suppose कर लो, Sensex has three states, high, medium, and low, and depending on this stock prices will be decided. Does that make sense? Yes, sir. So instead of two states, we have three states of Sensex which are high, medium, and low, and they are jumping. So let's say high, medium और low. ये हमारा Sensex values है. Although we do not really require to give any names for hidden states, but we can always give. And there is a transition between themselves. मतलब सब एक दूसरे से ये कर रहे हैं. And any particular state is giving, suppose this number is coming from high state, this number is coming from low state, and so on. So this is your hidden Markov model. We can model it as. So first let's understand the parts of a sequence. So given a sequence x1 to xn, जैसे भी स्टॉक प्राइसेस का अगर सपोज कर लो, तुम्हारा था 100 था किस दिन 50 था किस दिन 80 था, then 100, 200, so on. So parts of x is a sequence of states pi1 to pi n. So हमारा सपोज कर लो we have k hidden states. So what will happen among them? It will be jumping from 1 to 1, 1 to 2, 2 to 1, and so on. It can jump. Okay, so parts of a sequence is, suppose at time t equals to 1, it was in hidden state 2, so it emitted a sequence a value x1. At time t equals to 2, it was in state 1, it emitted x2. In time 3, it was in state k, it emitted 3, and so on. So this is the parts of a sequence, and we focus on this to estimate how we can find it. So why are we trying to build us suppose एक stock prices का number है 100, 200, ये हर दिन का तुम्हारा closing price है, and if you want to apply hidden Markov model, how hidden Markov model will help me in predicting the future? अगर हम लोग ये सारा कुछ एस्टिमेट कर लिए, हम लोग को एस्टिमेट क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे एक तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगा, starting probabilities we can pass, but that can be, or emission probabilities क्या होगा. So if I know what are my pi1, pi2, pi_n, which are called the hidden Markov models, then I can predict the future कि future में क्या sequence आएगा, and that's why hidden Markov model becomes very interesting case. So what happens? Generating a sequence by the model. So if I know my pi's, what we can say start state pi1 according to a probability a0 pi1. That is the initial probability. Emit later x1. So यहाँ 0 से start किए, ये second state में यहाँ से jump किया. Second state में jump होने के चलते it has emitted a value x1 that is known to us. This x1 I know. This is the observation sequence. Okay. Then from here it will jump to another state, right? It will emit x2. So I can get a sequence of pi1, pi2, pi3, pi4, pi4, pi6, and or so on, and that will give me a resulting x1, x2, x3, x4, and xn. So we can generate, if we know one HMM, when I say HMM, this is called pi a b. So pi is the initial probabilities, A is the transition probability, and B is the your emission probabilities. So we know the specification of these, and based on that, I can generate any sequence and see what will happen in the future. So what we next try to find is the likelihood of parts. So suppose कर लो एक hidden Markov model बना दिए हैं, and we want to understand the sequence which we are seeing is coming from this hidden Markov model. So mathematically we can represent it like this: probability that the observation sequence come from an HMM pi. Okay. So this is the probability we can calculate for this sequence which we have found. इसी तरह से लाखों सीक्वेंस हो सकते हैं, और हर का लाइक्लीहुड देखना पड़ता है कि किससे एक्चुअली निकला होगा.
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एचएमएम को समझने के लिए. इट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट कैसीनो. So suppose you are playing a game in casino. There are two kind of dice. One is, just a second. If there is a fair dice, probability of getting 1, 2, 3, 4, 5 all remains same equals to 1/6. Suppose loaded die है. Loaded die में क्या होता है कि probability of getting 6 is 1/2 and probability of getting any other number is 1/10. So casino player जो एक suppose you went to a casino and you are playing. Whenever you throw, you will. So game ऐसा है, यहाँ पे समझा देता हूँ. Suppose bet $1 का है. When you throw, you will get a number, then the dealer will throw the dice. When dealer throws, whoever gets the highest number wins that $1. So $2 हो गए. अब तुम्हारे साथ क्या है? The person who is playing has a fair dice. So every time he will throw, he will get 1/6 probability that it is 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Loaded dice से तुम्हारा dishonest casino वाला खेलता है, that the dealer he has both loaded and fair die. So sometimes he plays with the fair dice, sometimes he plays with the loaded dice. So which you do not know at what time he flips the dice so that he start winning. Is the problem, is the situation clear? Yes, sir. Yes, sir. तो एचएमएम बिल्ड करने में तीन टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं. वन इज डिकोडिंग प्रॉब्लम, देन द इवैल्यूएशन प्रॉब्लम एंड देन द लर्निंग प्रॉब्लम. विद द हेल्प ऑफ दिस डिसऑनेस्ट कैसीनो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम. So suppose you went to a casino and you played with the fair dice, and this is the loaded dice which the dealer is playing with, and this is the sequence it has been generated. So the decoding problem is what proportion of the sequence was generated with the fair dice and what portion of the with the loaded dice. This is called decoding problem. So सपोज कर लो, आई डोंट नो हाउ मेनी 50 गेम 50 बार हम लोग खेले. मैंने अपना फेयर डाइस हमेशा यूज किया एंड जो कैसीनो का जो डीलर था वो कभी फेयर डाइस यूज कर रहा था, कभी लोडेड डाइस यूज कर रहा था. तो ये सिचुएशन हुआ. सो इफ यू पे अटेंशन यू कैन सी दैट जो पहला वाला 3 पार्ट में मैंने बांट दिया है, दिस लुक्स लाइक वेदर फेयर डाइस इज यूज्ड और लोडेड डाइस इज यूज्ड. टेल मी. Fair. Fair dice. Fair dice. ये वाला सीक्वेंस देख करके क्या लगता है? Loaded dice. क्या बात है, म्यूजिकल क्लास होगा. And this is again the fair dice. So just looking at the sequence you can get an idea कि कहां पे कैसीनो का जो डीलर है वो चेंज कर रहा है between fair and loaded dice. Okay, so this is decoding problem. दूसरा प्रॉब्लम होता है इवैल्यूएशन प्रॉब्लम. इवैल्यूएशन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये तुम्हारा सीक्वेंस है. हाउ लाइकली इज दिस सीक्वेंस गिवन आवर मॉडल ऑफ हाउ द कैसीनो वर्क्स. सो अगर मैंने कोई एचएमएम बनाया, हाउ लाइकली इज दैट सीक्वेंस इज कमिंग फ्रॉम द एचएमएम. दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन प्रॉब्लम. इज दिस क्लियर? पहला था कि what portion of sequence was generated with fair dice and what portion by loaded dice. Now given this sequence I have built an HMM. I want to see how likely, likelihood वाला पार्ट हो गया कि ये कैसीनो क्या कहते हैं जो सीक्वेंस जनरेट हुआ है वो तुम्हारा हम जो HMM बिल्ड कर रहे हैं उससे हुआ. तो दिस इज इवैल्यूएशन प्रॉब्लम. And finally learning. How loaded is the loaded die and how fair is the fair die. Means how often does the casino player change it from fair to loaded and back. So इसमें देखो ये 3 पार्ट में हम लोग देखे थे. तो if you can look at it, if we just take the parts जो हम याद है x sequence parts of an x बोले थे. So this is a parts of an x. If I calculate the probabilities
it will come out to be 0.64. So at least 64% of the times he is changing the. So this is what we call learning question. So एक simple सा example है, just look at the numbers. So what we are showing at that probability of getting an 1 using fair dice is 1/6 for all 1, 2, 3, 4, 5, 6, and probability of getting 1 to 5 with a loaded die is 1/10, and probability of getting a 6 with a loaded die is 1/2. Now fair and loaded. What percentage of time the casino player is switching between fair and loaded dice? It is 5%. So what it is saying, if he is using fair, he will continue using fair with a probability 9.5, or he will switch with the 5% chances that he will switch with the loaded dice and again start playing with 95% dice. If he is using the loaded dice, he will again switch with the 5%. So can you see a hidden Markov model here? अगर हाँ तो क्या क्या है बताओ? What are the hidden states? What are the observation states? And what are the emission probabilities and all? Hidden as a changeover of die. Very good. So these are the hidden state, and these are the jumps which we are already seeing here. इसका हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जानते हैं 0.95, 0.05. नाउ अगर एट दिस प्ले ऑफ द गेम अगर फेयर यूज हुआ है तो इट विल बी सम प्रोबेबिलिटी. सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी विद विच दिस विल बी इमिटेड. एंड अगर लोडेड यूज हुआ है तो देयर विल बी इट विल बी यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटीज. ओके, सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हम लोग को पता है, इमिशन प्रोबेबिलिटीज हम लोग को पता है, right? Now we really need to find out what are the values for this one. So if you are looking at the dishonest casino model, suppose the sequence of the rows is 1, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 5. Then what is the likelihood of, अब मैं एक एक को तुम्हारा रिलेट कर रहा हूँ उसके हिडन स्टेट से कि ये सारे नंबर्स तुम्हारे फेयर से आए हैं. So I'm looking at a pi, which is a hidden Markov model, which says that fair throughout fair has been used. So suppose जो इनिशियल प्रोबेबिलिटीज है वो है हाफ एंड हाफ. आई कैन यूज एनी वन ऑफ देम. सो इफ आई ट्राई टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, माय प्रोबेबिलिटी इज 0.5 into 10 to the power -9. इज दैट ओके? इस सीक्वेंस को जनरेट होने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए विच इज 0.5 into 10 to the power -9. नाउ सपोज, सॉरी कहाँ चला गया? Now suppose एक सीक्वेंस हमने रोल किया 1 6 6 5 2 3 3 6. Now we want to that what is the likelihood it has come from a fair dice. So fair dice का तो सेम रहेगा जो पिछले बार में हम लोग कैलकुलेट किए थे 1/2 1/2 1/2 है. ये जो हम लोग निकाले थे उसका फेयर डाइस चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है. 10 सीक्वेंस है, सो इट इज 1/6 to the power 10 and 0.95 to the power 9. एक हमारा रहेगा सेम अगर फेयर डाइस यूज हुआ है. अगर लोडेड डाइस यूज हुआ है इस सीक्वेंस को निकालने के लिए, सो इट ओनली थिंग विल चेंज, यहाँ पे 1/10 आ जाएगा और ये हाफ प्रोबेबिलिटी 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज 0.5 into 10 to the power -9. सो इट इज 100 टाइम्स. यहाँ पे 10 to the power -9 है देखो, और यहाँ पे 10 to the power -7. अगर हम बोलते हैं कि इट इज लोडेड थ्रू आउट वर्सेस इट वाज फेयर थ्रू आउट, सो इट इज 100 टाइम्स मोर लाइकली दैट डाई इज लोडेड. डज दैट मेक सेंस? लाइकलीहुड का फंडा क्या है? Yes, sir. मतलब देख हम लोग Yes, बस sir. हम लोग देख सिर्फ ये रहे हैं सीक्वेंस को, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक्चुअली में मेरा या तो थ्रू आउट फेयर यूज हुआ है या थ्रू आउट लोडेड यूज हुआ है. अगर थ्रू आउट फेयर यूज हुआ है तो उसका प्रोबेबिलिटी ये होगा 0.5 into 10 to the power -9. अगर लोडेड यूज हुआ है तो 0.5 into 10 to the power -7. सो लाइकलीहुड का मतलब यही हुआ कि वी कैन कंक्लूड दैट it was he has used the loaded dice instead of the fair dice. Clear? Chalo. So
three main questions of HMM are given a HMM. गिवन HMM मतलब तुमने उसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया है, इमिशन प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया है. गिवन an HMM and a sequence S, you find a sequence pi of states that maximizes this. तो एक सीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं जैसे फेयर 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 लोडेड लोडेड लोडेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन pi and that it is given that it is coming from the HMM which I have built. Evaluation problem क्या होता है कि given a HMM and a sequence X, I want to find that probability that it is sequence is coming from this HMM which I have built. And learning क्या होता है, a HMM with unspecified transition and emission probabilities हमको पता ही नहीं है. Actually learning सबसे पहले होता है, उसका decoding and evaluation हो सकता है. You can see think like that. We need to find this parameter emission probabilities and transition probabilities that maximizes P of X given theta. तो decoding problem होता है find the most likely parts of a sequence which we have already seen. So suppose pi 1 to pi n मेरा ये है, क्या कहते हैं, HMM से A आ रहा है. I want to maximize P X given pi. So it is argument maximum of pi given P X pi is simply तुम्हारा इस नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जाता है. The initial probability into emission to x1, then second jump जो हमारा pi 1 से pi 2 into its own emission probability and so on. This is come from dynamic programming. I'm not getting into it. I'm just giving you an overview so that we can find it using dynamic programming. और वो कैसे होगा कि हम मान लो यहाँ पे काट देते हैं इसको. ये टोटल सीक्वेंस हम देखे हैं, हम एक जगह पे इसको काट दे रहे हैं. And given that we end up in state K at step I maximizes the product to left and right. तो हम तुम्हारा स्टेप I पे स्टेट K में थे, ये फॉरवर्ड तरफ से भी देखेंगे और बैकवर्ड तरफ से भी देखेंगे. तो ऐसा कुछ है. सपोज कर लो कि these are the states. On column we have the states. Sorry, on the rows we have the states. On the column we have the sequence. Suppose मेरे को पता है कि यहाँ पे ये तुम्हारा स्टेट था. नाउ विल ट्राई टू फॉलो कि अगर हम लास्ट स्टेट ये है तो क्या पॉसिबल सीक्वेंस फॉलो किया होगा, किस किस स्टेट से ट्रांजिशन करके तुम्हारा फाइनली ये बना होगा. सो दिस इज डन यूजिंग विटेब्री एल्गोरिथम व्हिच इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक. तो कैसीनो एग्जांपल में देखते हैं. लेट x बी अ लॉन्ग सीक्वेंस विद अ प्रोपोर्शन ऑफ 1/6 फॉलोड बाय अ पोर्शन ऑफ 1/26. तो पहले क्या हुआ है कि एक लंबा सा सीक्वेंस है, पहले हम फेयर डाइस यूज किए हैं तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है. फिर हम लोग छोटा लोडेड डाई यूज किए हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 6 आने का 1/2 है. सो इट इज नॉट हार्ड टू शो दैट पहला F यूज हुआ है और फिर L हुआ है. सो 6 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 पास्ड एज F, और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6. ये तुम्हारा मेरा पहला पार्स हो गया. ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आएगा 1.6 into 10 to the power minus 5 and this will come as past of L 0.4 into 10 to the power minus 5. Now looking at these two, what is the likelihood it is in the first sequence, जो 1 2 3 4 5 6 है, he has used the fair dice or he has used the loaded dice? Look at the probabilities. मैं सिर्फ इतना सीक्वेंस देख रहा हूं. एक मिनट जैसे इसको क्लीन कर देते हैं. ये मेरा कंप्लीट सीक्वेंस आया है. नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 6 यहां से यहां तक का. दिस इज माय पार्स रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ एन x. नाउ इफ आई ट्राई टू फाइंड द probabilities that it is coming from a fair die is 1.6 into 10 to the power minus 5 and probability that it is coming from a loaded die is 0.4 into 10 to the power minus 5. So what do you think? Is it has he used a fair die or a loaded die? fair die sir. F है क्योंकि F का probability है वो ज्यादा है तुम्हारा loaded die से. But if I choose a sequence 1 6 2, अगर मैं इस वाले सीक्वेंस को देखता हूं 1 6 2 6 3 6, ठीक है, यहां पे अगर हम फेयर का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6 कैरेक्टर है, इट विल रिमेन सेम.
बट अगर हम लोडेड का निकालेंगे तो इट विल कम 9 into 10 to the power minus 5. So it is clear that it has been used a loaded die. Does that make sense, guys? Yes, sir. So Yes, this sir. is the decoding problem. अब आ जाओ इवैल्यूएशन में. What it says, start with pi n according to a probability. ये exactly हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं. So given a sequence x, what is the probability that x was generated from this model? That is what we call it evaluation. Given a position y, what is the most likely state that emitted xi? तो ith स्टेप में 1 to k में से कौन सा स्टेट एक्चुअली तुम्हारा इसको जनरेट किया था? तो एक फिर से देखते हैं. 1 2 3 4 3 1 ऐसा एक सीक्वेंस है. 6 को मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इट मे बी अ फेयर डाई और इट मे बी अ लोडेड डाई. सो इफ यू अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यू विल सी दैट the first part is fair and the last part is fair, but in between, if we try to calculate probability of FFF versus LLL, you can see if it is a fair dice probability is 1.4 to the power minus 9, whereas if it is a loaded die, then it is 0.23 to the power minus 9. So most likely path for first one is fair. Too unlikely in transition is fair to loaded to fair. However, marked letters more likely to be L than unmarked letters. So this was the evaluation problem. So we have to develop algorithm, probability of x given the model, probability of xi to xj, probability of substring of x given the model, and then the posterior. जब ये posterior की बात करते हैं तो ऐसा होता है, सपोज कर लो ये ith में तुम्हारा ये स्टेज था. So it can follow any path ना. So I'm just trying to show many paths that the starting state could be state 1, state k, तब उसके बाद फिर state 2 पे गया होगा, state 5 पे गया होगा, finally it has reached here. Similarly, from here onwards to the last sequence, we can state go through many paths. So the posterior decoding is just finding that which path it has followed to generate this sequence. Finally, learning. यहाँ पे जो मैंने ये किया, I forgot the algorithm which we used to do is again dynamic programming based. What it does, it looks at forward algorithm and backward algorithm, okay, and try to find कि ये जो आया है kth ith टाइम पे जो सीक्वेंस आया है, वैल्यू आया है, वो किस स्टेट में था उसका. एंड फाइनली द लर्निंग प्रॉब्लम, फाइंड द पैरामीटर्स. अभी तक हम ये दोनों जो डिकोडिंग और इवैल्यूएशन कर रहे थे, अज्यूमिंग दैट कि हमको इनिशियल प्रोबेबिलिटीज पता है, हमको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज पता है, हमको क्या कहते हैं इनिशियल ट्रांजिशन और इनिशियल प्रोबेबिलिटीज तीनों पता है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा उसके लिए लर्निंग बोलते हैं. सो इजी वी नो द सीक्वेंस ऑफ द हिडन स्टेट्स. अगर हमको हिडन स्टेट्स का सीक्वेंस पता होगा तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि ये सीक्वेंस कैसे, क्या उसका प्रोबेबिलिटी है. जस्ट काउंट नंबर ऑफ टाइम्स ईच ट्रांजिशन है जाकर एंड डिवाइडेड बाय द टोटल ट्रांजिशन, दैट विल गिव यू हाउ मेनी टाइम्स इट हैज जंप. Given an HMM, an observed sequence, we can compute the distribution over the path and therefore the expected counts. इसमें चिकन और एग प्रॉब्लम है. चिकन और एग प्रॉब्लम क्यों? एनी आइडिया? Given an HMM, yes, please go ahead. Sorry. Which chicken has egg? Which chicken has egg? ये तो एक तो अपने आप में नया प्रॉब्लम बन गया. Very nice. So given HMM and then there is an object sequence, or given an object sequence there is an HMM. ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं और इस कॉल EM एल्गोरिथम. सो गेस द इनिशियल HMM पैरामीटर. हम लोग इनिशियलाइज कुछ भी एक नंबर से करके स्टार्ट करते हैं. एक्सपेक्टेशन, EM का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन. मैं लिखना भूल गया था. सो यू रिमेंबर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन. पहले हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं. कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पाथ्स एंड M स्टेप से होता है कि कंप्यूट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ पैरामीटर्स व्हिच हैज कम फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेशन. So this is done again using a forward backward algorithm. It is called Baum-Welch algorithm. It's compute the probability of each state at each position using forward and backward probabilities, and उसके बाद compute probabilities of each pair of state at each pair of consecutive position of I and I plus 1, forward I and backward I. Expected transition finally इससे निकलता है. So for most of the
I'm not getting to this algorithm because then we have to study dynamic programming. But ये जान लो कि ये 3 algorithm use होता है तुम्हारा HMM को बनाने में. Any questions so far, guys? If there are no question, इसका एक ना एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने किया था फोर्ड में वो मैं दिखाता हूँ. सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग यूजिंग हिडन मार्कोव मॉडल्स. तो सपोज कर लो एक मशीनिंग सेंटर है विच इज ड्रिलिंग होल्स इनटू अ स्टेनलेस स्टील प्लेट ऑफ 1/4 इंच थिकनेस. और because we were doing this experiment to see how long drill bit will drill before it fails, so we have not used any coolant anything. We have just keep drilling. एक होल हुआ, फिर नेक्स्ट होल हुआ, फिर नेक्स्ट होल हुआ, ऐसे करके तुम्हारा करते गए हैं. एंड दीज आर द थर्स्ट फोर्स एंड टॉर्क डेटा. सो दिस इज एग्जैक्टली अ कंडीशन मॉनिटरिंग डेटा. वी आर कलेक्टिंग दिस डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बिल्ड अ हिडन मार्कोव मॉडल. So this is how the observation sequence. So we were collecting thrust force and torque. Can anyone explain me this signature? This is for one drill bit. Have you understand what is the process? Any questions? Please feel free to ask. So ये क्या हो रहा है? जब ड्रिल बिट अंदर जा रहा है तो थर्स्ट फोर्स बढ़ रहा है. जब होल हो जा रहा है व्हेन इट इज रिट्रैक्टिंग तो थर्स्ट फोर्स नीचे जा रहा है. फिर दूसरा होल बनना शुरू हो रहा है, फिर वही हो रहा है, फिर तीसरा होल हो रहा है, फिर चौथा होल हो रहा है, फाइनली वो होल ड्रिल बिट टूट जा रहा है. सिमिलर प्रोफाइल फॉर टॉर्क आल्सो. इज दैट क्लियर व्हाट इज हैपनिंग? अगर ये दोनों को हम लोग नॉर्मलाइज करके अगर प्लॉट करेंगे ना तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देखो इट इज फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पाथ. एक तुम्हारा एलिप्स काइंड ऑफ पाथ फॉलो करके वापस यहाँ पे आकर के एक खत्म हो जा रहा है. इज दैट क्लियर गाइस? क्या प्रोसेस है? एनी क्वेश्चन अराउंड द प्रोसेस? सो इसको हम लोग मॉडल करने के लिए क्या किए थे? वी हैव टेकन सिग्नल हिस्ट्रीज फ्रॉम द सेकेंड होल. सो जितने ड्रिल बिट थे हमारे पास करीब 12-14 ड्रिल बिट थे. तो सेकेंड होल का जो सिग्नल हिस्ट्री है दिस इज द ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस. इसको लेकर के वी हैव प्रिपेयर्ड अ एक्सीलेंट हेल्थ स्टेट ऑफ द मशीन. एंड सपोज कर लो एक्सीलेंट हेल्थ स्टेट का जो लॉग लाइक्लीहुड आता है, जो लाइक्लीहुड में बोल रहा था, वो डिफरेंट ड्रिल बिट्स का अलग अलग ड्रिल बिट का आया. सो व्हाट वी हैव डन, और सारे लॉग लाइक्लीहुड का मीन निकाला और सिग्मा निकाला और म्यू माइनस के सिग्मा थ्रेशोल्ड बना दिया. ये थ्रेशोल्ड के नीचे जितना भी तुम्हारा होल नंबर आ रहा है उसको लेकर के नेक्स्ट एचएमएम बनाया, फिर नेक्स्ट एचएमएम बनाया, जब तक कि सारा डेटा एग्जॉस्ट नहीं हो गया. So सपोज कर लो मैं सिर्फ चार ड्रिल बिट्स के लिए दिखा रहा हूं. These are the second drill bit has drilled 20 holes and then 19 holes then failed. Third drill bit 19 holes करके फेल हो गया. फोर्थ ड्रिल बिट 15 होल करके हो गया. तो सबसे पहले क्या किए कि सेकेंड ड्रिल बिट का थर्ड फोर्स एंड टॉर्क डेटा लिए और इस पे पहले एचएमएम बनाए. एचएमएम बनाए मतलब एचएमएम का पैरामीटर पहले लर्न किए, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन डिकोडिंग किए. उसके बाद म्यू माइनस के सिग्मा लगा करके देखें कौन सा होल थ्रेशोल्ड को ऊपर है. ठीक है, अब ये सारे होल मिल गए. अब नाउ व्हाट आई विल डू, फ्रॉम ड्रिल बिट नंबर 2 आई विल टेक द 12th होल, ड्रिल बिट नंबर 3 आई विल टेक द 12th होल, फ्रॉम ड्रिल बिट नंबर 4 आई विल टेक द 9th होल, और फिर से एक एचएमएम बनाएंगे. फिर उस एचएमएम से एज आई हैव हाइलाइटेड विथ येलो, फिर उस एचएमएम से इवैल्यूएट करेंगे पूरा सीक्वेंस को. सो जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड आएगा मे बी सपोज एट 16 फॉर सेकंड एंड थर्ड एंड फॉर 11th इट इज 4th. फिर जो बचा फिर नेक्स्ट बनाएंगे. ऐसे करते करते फाइनली वी विल गेट समथिंग लाइक दिस फॉर ऑल द होल्स. सो इसको हम लोग नेम कर सकते हैं. जो पहला एचएमएम बना है उसको बोलेंगे एक्सेलेंट हेल्थ स्टेट. जो दूसरा है वो है काइंड ऑफ गुड हेल्थ स्टेट. ऑरेंज इज फेयर, पर्पल इज योर ऑलमोस्ट फेल्ड एंड रेड इज फेल्ड. अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी से होल्स बनाते हैं तो लकली यू कैन सी दैट हम लोग एक डायनेमिक टूल रिप्लेसमेंट पॉलिसी बना सकते हैं rather than स्टैटिक. स्टैटिक का क्या फंडा है कि मोस्ट ऑफ द
drill bits are able to hold 19 holes, so change the drill bit after 19 holes. But in that case, there will be 4 failures and loss of ability to produce 19 holes. दूसरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा कि जैसी 15 होल हो जा रहा है बंद कर दो. इस केस में इतना सारा जो होल हो सकता है उसको हम लोग लूज कर रहे हैं. डायनेमिक पॉलिसी क्या हो सकता है? वी हैव फाउंड 3 हेल्थ स्टेट, green, yellow, orange. The moment it enters in the third health state, stop it, and your utilization will be up by 89% as compared to 78%. So this is where I end, guys. How we can use HMM in a real life predictive maintenance setting I have shown. Any questions? Do you find hidden Markov model interesting? It is one of the state of the art model nowadays. जितना भी ये टेक्स्ट आप लोग ये करते हो ना, सीरी से बात करते हो, गूगल से बात करते हो, that actually uses hidden Markov model for speech recognition. तो क्या किया है, हर वर्ड का ना बहुत सारा ट्रेनिंग सैंपल दे दिया है. So it learns from that training sample. So the moment you say, suppose मैंने एक डिक्शनरी बना दिया जिसमें 26 वर्ड है, एप्पल, ऑरेंज, सारे फ्रूट्स हैं उसमें. ये जो इसका स्पीच का जो तुम्हारा ये होगा, क्या कहते हैं, सिग्नल्स होगा, उस पे वी हैव मेड एन एचएमएम फॉर ईच वन ऑफ द वर्ड्स. सो एप्पल है तो ये एचएमएम है, ऑरेंज है तो ये एचएमएम है. नाउ द मोमेंट यू से एप्पल, it will take that speech signal and check with which HMM it is fitting. Suppose the apple has the most highest likelihood, so it will say that it is an apple or apple type हो जाता है. Okay guys, any questions? Okay, if there are no questions, this is where I end all the techniques. Okay, I will not be discussing any more techniques. From next class onwards, I request you to download R Studio and R. First download R. You can just go and search online. Then download R Studio and be ready. From next class, we will try to do the demo of how we can, code all these techniques and see the results and everything. Mostly next Thursday, I won't be able to take class. I have to travel. And next class kab hoga, I will inform Dr. Khandelwal. He will inform. But in the meanwhile, please install R and R Studio. So I will just show you. That would be good actually. कि क्या करना है. Go and just type download R. The very first one, cranrproject.org, download R 4.0.3. यहां से R download कर लो. You can see my screen, right? Yes, sir. You just need to say download R in Google. It will guide you to. So the name of the website is cran.r project. इसको करने के बाद इसका UI के लिए से download R Studio. Depending on whether you have what operating system, you can download R Studio for rstudio.com. ठीक है, Mac है तो Mac वाला करना, Windows है तो Windows वाला करना. And be ready from next class. I guess next 3 to 4 classes we will be learning how to do linear regression, lasso, ridge, and all SVM, time series. All this we will be studying. Okay. Anything else? If you do not have any question, then I will say goodbye and I will go and do the sabji marketing. And happy Diwali in advance, guys. I won't be able to see you before that. So have a very good Diwali and I will catch up with you guys again with the demo sessions. Thank you very much. Have a good day. Happy Diwali.
Happy Thank Diwali, you. sir. Thank you, sir. Bye bye.